Hi all of you, very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में JEE Main जनवरी 2025 indefinite इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 22 Jan 2025 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है. एंड हियर इंटीग्रेशन क्या है, e टू द पावर x इन ब्रैकेट क्या है, साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 प्लस x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. दिस इज इक्वल टू व्हाट, जी एक्स प्लस सी. और c जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. सो g 1/2 की वैल्यू हमें एवेलुएट करना है. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट, सो आई जस्ट अज्यूम दिस इंटीग्रेशन एज i. इसको इंटीग्रेशन i एंड क्या है हमें गिवन, e टू द पावर x है, इन ब्रैकेट क्या है, x साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस व्हाट साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर व्हाट 3/2 प्लस व्हाट x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, डी एक्स. सो इस इंटीग्रेशन को हमें एवेलुएट करना है. सो द फार्मूला दैट विल बी यूज हियर इज e टू द पावर x एफ एक्स, राइट, प्लस व्हाट एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी. सो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होना है. सो एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो एफ एक्स है हमारा दैट इज व्हाट हियर, एफ एक्स जो है वो हमारा है यहाँ पे x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है, सो आई यूज़ हियर द यू वी डब्ल्यू, थ्री फंक्शन है प्रोडक्ट के फॉर्म में. सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दैट इज़ व्हाट वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डब्ल्यू एंड डी वी बाई डी एक्स प्लस यू वी, right, uv and dw by dx. So this formula will apply to differentiate this function f dash x. So f dash x equal to, so differentiating this function f dash x, we get here what, on simplifying we get here the sin inverse x by root 1 minus x square कॉमन लेने के बाद जो है f dash x हमारा क्या हो जाएगा, f dash x जो है वो रिजल्ट में हो जाएगा f dash x इक्वल टू व्हाट वी हैव हियर इज साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हियर द 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 minus x square, right, 1 minus x square, and then plus what we have here is plus x by 1 minus x square plus 1 by plus what x by, here we have 1 by 1 minus x square, right, 1 by x by basically x by 1 minus x square, okay, x by 1 minus x square. So x square get cancelled, so we get here the what, sine inverse x by, this is what, 1 minus x square and 1 minus x square in under root, so this is what 3/2 plus x by 1 minus x square. So this is f dash x, right, this is f dash x. So we can see here that formula that we have here is what, we can apply then the formula in the question, right. So I integration is basically e to the power x and the fx plus f dash x, dx, this is equal to fx e to the power x fx. So e to the power x fx is what, x sin inverse x, we have here the x sin inverse x by what, under root 1 minus x square. So we get this plus c, okay, plus c. So this is equal to basically gx plus c, this is equal to gx plus c. So we get here the, on comparing we get gx क्या हो गया हमारा function, that is what, e to the power x sin inverse x, right, x sin inverse x divided by under root 1 minus x square, and we are asked to evaluate g half. So we'll simply put the value here, x की value 1/2 sin inverse 1/2, right, in under root what, under root 1 minus 1/4, okay. So on simplifying this, what do we get here, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, g half 1/2 की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, g 1/2 की वैल्यू, this is what, e to the power 1/2 and g sin inverse 1/2 is pi by 6, okay, divided by what, this is what, root 3/2. So 2 and 2 get cancelled. So this is basically root e by root 3 into what, pi by 6. So we can write this as pi by 6 and root e by 3. If you see the option, so the correct option is the pi by 6 e by root 3, right, in a square root what, e by root 3. Second option is the correct option. Let us continue with the next question.
Okay, now we have the second question here, and the question here is the integration जो है x क्यू sin x dx क्या है, जी एक्स प्लस सी के इक्वल है, एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. हमें क्या है गिवन है यहाँ पे 8 टाइम्स जी पाई बाई टू प्लस जी डैश पाई बाई टू इक्वल टू अल्फा पाई क्यू प्लस बीटा पाई स्क्वायर प्लस गामा. अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू जेड. देन अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स है, राइट. So to evaluate this integration, what I will do here is मैं integration by parts का जो formula use करूँगा, that is what u v1 right minus u dash v2 right plus फिर u double dash v3 minus so on, alternate sign plus minus. So u dash is basically what, u dash is du by dx, right. U double dash is what, du dash by dx, right. U triple dash is what, basically u double dash u du double dash by dx, and so on, right, and so on. So this will be derivative u, and u dash is the derivative of u, and u double dash is the derivative of u dash, and so on. And v1 is what, integration of v, and what is v2, v2 is the integration of v1, right. And what is v3, v3 is the integration of v2, right, and so on, right, and so on. So we'll apply the formula of that di method basically of integration by parts. So u is our x cube and v is sin x. So first function x cube and derivative of sin x, integration of sin x, this is minus cos x, right, and then plus minus, right, x cube derivative is 3x square, right, x cube derivative 3x square, and minus, right, and cos x integration is sin x, then what, plus, and 3x squared derivative is 6x, right, 6x, and minus what, integration of sin x is minus, so plus cos x, right, plus cos x, and then minus derivative of 6x is 6, right, 6, and integration of cos x is sin x, right. After that derivative of 6 will be 0, so no need to write further. So now we have here what, here the minus x cube cos x, minus x cube cos x, this is what, plus 3x square sin x, 3x square sin x, plus what, 6x cos x, 6x cos x minus 6 sin x. So this is what, integration of this function, and plus c, okay, plus c. So this is basically what, g of x plus c, g of x plus c. So from here we get what, right, g of x. So we get here the g of x and minus x cube cos x, right, plus what, 3x square sin x, 3x square sin x, and minus what, plus 6x, sorry, 6x cos x, 6x cos x minus 6 sin x, right. So this is gx. We need to evaluate what, we need to evaluate g here, the g pi by 2. Okay, so therefore we get here the gx, right, that is minus x cube cos x plus 3x square sin x plus 6x cos x minus 6 sin x, एंड जी पाई बाई टू की वैल्यू, मैं एक्स की वैल्यू मैं पाई बाई टू पुट करता हूँ, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 6, बिकॉज कॉस पाई बाई टू इज 0, साइन पाई बाई टू इज 1. सो वी गेट द जी पाई बाई टू इज व्हाट, 3 पाई स्क्वायर बाई 4 minus 6. And so finding the g dash x means derivative of g of x, right. So simply just applying in x cube cos x में product rule apply कर दिया, 3x square sin x में product rule, 6x cos x में भी product rule, minus sin x का derivative minus 6 sin x का derivative cos x. So on simplifying this, इसको simplify करने पे हमें g dash x की वैल्यू क्या मिला, x cube sin x. वी गेट हियर द एक्स क्यूब साइन एक्स, हमें जी डैश एक्स मिला. तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, जी डैश, यहाँ पे जो फाइंड करना है दैट इज जी डैश पाई बाई टू. सो जी डैश पाई बाई टू, राइट, जी डैश पाई बाई टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पाई क्यूब बाई 8 हो गया, राइट, पाई क्यूब बाई 8, एंड साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इज 1. सो वी गेट हियर द पाई क्यूब बाई 8, ये हमें मिल गया जी डैश पाई बाई टू. नाउ व्हाट वी हैव हियर इज जी डैश पाई बाई टू और जी पाई बाई टू की वैल्यू हमने इवेलुएट कर लिया. हमें यहाँ पे 8 टाइम्स जी पाई बाई टू प्लस जी डैश पाई बाई टू, जी डैश पाई बाई टू, ये वैल्यू इवेलुएट करना है. सो यहाँ पे 8 एंड जी पाई बाई टू की वैल्यू क्या है हमारा, 3 पाई स्क्वायर बाई 4 है माइनस 6, राइट,
एंड प्लस व्हाट हियर द g डैश पाई बाई 2 हमने क्या इवेल्युएट किया है, पाई क्यूब बाई 8, राइट, पाई क्यूब बाई 8। सो मैं जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, दिस इज व्हाट 3 पाई स्क्वायर बाई 2, 3 पाई, सो 6 पाई स्क्वायर, राइट, 6 पाई स्क्वायर, ओके, 6 पाई स्क्वायर हो गया, ओके, एंड दिस वन इज व्हाट 48, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा पाई क्यूब, ओके, पाई क्यूब। सो वी कैन सिंपली राइट व्हाट, हम क्या लिख सकते हैं इसको, पाई क्यूब लिख लेता हूँ मैं पहले, राइट, that 6 pi square minus 48, and this result is equal to what, alpha pi cube plus beta pi square plus gamma, right, plus gamma। so इसको कंपेयर करने पे अल्फा की वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, अल्फा की वैल्यू जो है 1, राइट, एंड बीटा की वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 6, एंड गामा इज योर -48। व्हाट वी आर आस्क्ड टू इवेलुएट हियर, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। तो अल्फा इज 1 प्लस बीटा इज 6 एंड माइनस gamma is -48, so plus 48, right, so this is 7 plus 48, so we get here the 55, right, so 55 is the correct answer for this question. If we see the option, second option is the correct option, let us continue with the next question. Okay, now we have the question number 3 here, and in the question number 3 what we have the integration here, 2x square plus 5x plus 9 by under root x square plus x plus 1 dx is equal to x under root x square plus x plus 1 plus alpha under root x square plus x plus 1 and plus beta log x in mod what x plus 1 by 2 under root x square plus x plus 1, where c is the plus c, where c is the constant of integration, then alpha plus 2 beta की वैल्यू हमें फाइंड करना है। So to evaluate this integration, see here इंटीग्रेशन क्या है हमें, दैट इज 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, राइट, प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, अंडर रूट क्या है हमारा यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस x प्लस 1 dx। so first I use the transformation method, so what I do here is I just take 2 common, so ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/2x प्लस 9/2, राइट, dx डिवाइडेड बाय व्हाट, अंडर रूट में क्या हमें x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है, so the same value will make this term will make in the numerator part, so 2 I take outside, so x square के साथ मैं प्लस x प्लस 1 को ऐड कर दिया, राइट, so will simply what will do what, माइनस x and माइनस 1 कर दिया प्लस 5/2 x प्लस 9/2, राइट, 9/2 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया अपने पास, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। so now what I can write, this is 2, right, x square plus x plus 1, right, x square plus x plus 1 divided by under root x square plus x plus 1, मैंने इसके साथ सेपरेट कर लिया, and this is what minus x plus 5/2x, so this is what 3/2, so we can write here this 2 first, this 2, and this is what 3/2x plus what, this is minus 1 plus 9/2, so we can write this as 7/2, right, divided by what, under root x square plus x plus 1 dx, okay। so basically we split this integration in two integration, दो integration में हमने इसको convert कर लिया, and the first integration here is 2 and under root what, x square plus x plus 1 dx, and the second integration is 3x plus 7 by under root x square plus x plus 1 dx, okay। so just let this be I1 और इसको मैंने क्या मान लिया I2। now I will simply evaluate this two integration separately। so पहला इंटीग्रेशन जो है वो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट, dx। so to integrate this what I can write this as, by completing square method we will use here, so we can write this as x plus 1 by 2 the whole square, right, x plus 1 by 2 the whole square, so we can write here the minus 1 by 4 plus 1 dx, right। so this is what here अंडर रूट ये क्या बन गया हमारा, x plus 1/2 the whole square, and this is what 3/4, so we can write this as root 3/2 the whole square, and the formula that we will use here is under root what, x square plus a square, right, x square plus a square. What is that formula? That is x by 2 under root what, a square plus x square plus a square by 2 and log x plus under root x square plus a square plus c, right, so this formula we will apply. so simply applying the formula here, so x by 2, so x plus 1/2 under root what, x square plus a square, so x plus 1/2 the whole square, and a square that is root 3/2 the whole square,
and a square, so root 3 by 2 the whole square by 2 log x plus 1 by 2 under root x square plus a square, so x plus 1 by 2 the whole square and root 3 by 2 the whole square, right? So just simplifying this we get I1 here is this one, right? I1 का result हमने find कर लिया simply by applying the formula, right? Now I2 हमारा क्या है? I2 जो है वो है हमारा 3x, इंटीग्रेशन क्या है 3x plus 7 divided by what? Divided by है x square, right? X square plus x plus 1 dx. So to evaluate this what I will do use here is 3x plus 7 को मैं क्या लिखूंगा a and derivative of this quadratic polynomial, right? That is x square plus x plus 1 and plus b, right? We will first evaluate a and b. So this is what a and derivative of this one is 2x plus 1, right? Plus b, okay? Plus b equal to what? This is what 3x plus 7, okay? So to evaluate a and b, so equation अपने पास, so on simplifying we get a is 3 by 2 and b is 11 by 2, right? And therefore we can just put this value, right, in the integration I2 हमारा क्या है यहाँ पे, that is 2 times 3 is 3 by 2 times 2x plus 1, so we can write 3x plus 7 as 3 by 2 and 2x plus 1, right? 2x plus 1 plus 11 by 2 and divided by what? Divided by under root what? X square plus x plus 1, right? Dx. So now we'll integrate this, okay? So now we'll integrate this. So to integrate this we will apply this formula f dash x by root fx, that is 2 root fx plus c, and dx by root a square plus x square in the second part, this one log x plus under root x a square plus x square plus c. So this I2 integration will be your 3 by 2, right? 3 by 2 and 2 root fx. So 2 root fx is basically x square plus x plus 1, right? And this is what 11 by 2. If you see here, so we can write this as in square root that x plus 1 by 2 the whole square, x plus 1 by 2 the whole square plus root 3 by 2 the whole square, right? Dx. So 2 and 2 get cancelled here, so we get here the 3 under root what? X square plus x plus 1, right? And here plus 11 by 2 और इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, so that is log x, x की जगह पे क्या है यहाँ पे x plus 1 by 2 and plus what? Under root this one, so this one is basically what? X square plus x plus 1, right? इसको simplify करने पे root a square plus x square, so this result, okay? Now we have got the I1 and I2, so we'll put it in the I. Further, so simplifying, so ये 2 को multiply करने पे हमें क्या होगा? तो ये cancel हो जाएगा, 4 जो कैंसिल हो जाएगा 2, so x 2x by x 2 is what? X under root what? X square plus x plus 1, and this is what? 1 by 2 under root x square plus x plus 1, and this is what? 3 by 8 से ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई होने 3 by 4 and log x plus 1 by 2 under root x square plus x plus 1 and this part, right? So now we have to just add the like terms, right? So this is what here x, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ x under root what? X square plus x plus 1, इसे लिख लिया हमने, and this is what? 1 by 2 plus 3, 1 by 2 plus 3, so simplify करने पे ये क्या हो जाएगा? 7 by 2 under root क्या हो गया? X square plus x plus 1, okay? And इन दोनों को simplify करने पे so LCM is 4, and so this is what? ये हो जाएगा हमारा क्या? 22 plus 3, right? So 25, right? 25 by 4, so we can write here 25 by 4 and log what? X plus 1 by 2, x plus 1 by 2 and plus what? Under root x square plus x plus 1, right? Plus c. Now we have what here? So ये result जो है equal to क्या है हमारा? This integration is equal to x under root x square plus x plus 1, right? And plus alpha, right? Alpha under root x square plus x plus 1, right? X square plus x plus 1 and plus what? ये हमारा क्या? Beta log, right? Ln. So we can write ln, right? Plus x plus 1 by 2, x plus 1 by 2. This is x plus 1 by 2 under root what? X square plus x plus 1, right? X plus 1 plus c. So simply on comparing we get alpha और बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगा. अल्फा की वैल्यू 7 by 2 and बीटा की वैल्यू 25 by 4. अल्फा is your 7 by 2, so I write here. तो कंपेयर करने पे अल्फा की वैल्यू क्या मिला हमें? 7 by 2 and बीटा is what? बीटा जो है वो हमारा आ गया 25 by 4. We have to evaluate what? Alpha plus 2 beta. Alpha plus 2 beta की वैल्यू हमें फाइंड करना है. So 7 by 2 and 2 beta. So this will be what? 25 by 2. So इसको मैं ऐड करूँ तो that is what? 32,
right, by 2. So this is what 16, right? So answer for this question is 16. 16 is the answer for this question, right? Let us continue with the next question, right? Let us continue with the, so answer for this question is 16. So let us continue with the next question. Okay, now we have the question number 4 here. In the question number 4, what we have here, the integration fx क्या दे रखा है, fx that is what integration क्या है यहाँ पे 1 by x to the power 1 by 4, x to the power 1 by 4 in bracket what 1 plus x to the power 1 by 4 dx, and f0 is what, f0 की वैल्यू जो है that is -6 and f1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है. So to integrate this, simply I will use the substitution method. So I will put here the x की वैल्यू जो है ना t to the power 4, so that differentiate करने पे dx हमें क्या मिल जाएगा, dx जो है वो हो जाएगा 4t cube dt, 4t cube dt. ओके, एंड यहाँ से फर्दर t की वैल्यू अगर हमें पुट करना होगा तो t इज़ व्हाट x to the power 1 by 4. सो fx इंटीग्रेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 by x to the power 1 by 4. सो दिस विल बी व्हाट x to the power 1 by 4. So this will be t, right, and 1 plus t plus t into what 1 plus t, and what is dx, dx is for 4t cube dt है, right? So t से मैं t square t cube को cancel कर दूँ, so this is t square. So now we have, you can see here the 4, and this is what t square dt by 1 plus t. So to evaluate this, simply what I will do here is I will write here is 2t square minus 1 plus 1 divided by 1 plus t dt. Okay, so we can write this as 4 integration, this one is 1 minus t, right? We can write this as 1 minus t and 1 plus t, right? So we can write this as t square minus 1 को t plus 1 and t minus 1 लिख सकते हैं, right? And divided by t plus 1. So t plus 1 get cancelled. So simply here the integration of t is what, t square by 2 and minus dt is t. ओके, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 4 log t plus 1, राइट, 4 log t plus 1 plus c. So just open the bracket. So this is what 2t square minus 4t, right, plus what 4 log, ये क्या हो गया 4 log t plus 1, right, plus का c. एंड व्हाट इज t, t क्या हमारा, t जो है वो है x to the power, t जो है x to the power 1 by 4. So 2x to the power 1 by 4 to the power 2 minus 4x to the power 1 by 4 plus what 4 log x to the power 1 by 4 plus 1 plus c. Okay, so just simplify this. So we get here the 2x to the power 1 by 2 minus 4x to the power 1 by 4 plus 4 log x to the power 1 by 4 plus 1, right, plus 1 plus c. So this is what fx, ये हमारा क्या है fx है. Now one of the condition is given here, क्या given है हमें, f0 पे जो वैल्यू है that is what, f0 पे जो वैल्यू है that is -6. So we can apply that condition f0, right? f0 की बात करूँ मैं तो f0, so this is what 0 minus 0 and log 1 even is 0, so plus c, right, and this result is equal to what, -6 equal to c. So c की वैल्यू क्या आ गया -6. We have to evaluate what f1 की वैल्यू हमें evaluate करना है, right? आफ्टर पुटिंग c की वैल्यू -6 हमें इसमें क्या करना है, f1 की वैल्यू पुट फाइंड करना है. सो 2 1 to the power 1 by 2, so 1 minus 4 1 to the power 1 by 4, right, that is 1 also, right? 4 log, ये क्या होगा 4 log 1 plus 1 and -6. So this is what -2 plus 4 log 2 minus 6, right? 4 log 2 minus 6. So we can write this as 4 log 2 or minus 8, right? So from here we can take 4 common. So this is what log 2 minus 2, log 2 minus 2. If we see the option, right, 4 and in bracket what, log 2 minus 2. So the correct option is here, the option number first is the correct option. Hope you will be clear with this all solutions. Please like my videos, right? Consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.